सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की जो मेरी गेस्ट है वो है मिसेस नेहा झा। मिसेस नेहा झा ने बीएससी फैशन डिजाइनिंग की है फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन। शी इज एन आर्मी डॉटर, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी है, एक आर्मी ऑफिसर की बहू भी है। और वो बहुत शादी से पहले भी शी वॉज इनटू डिजाइनिंग और टीवी इंडस्ट्री में काफी काम कर चुकी हैं। और आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड की ऐसी ट्रांसफरेबल जॉब के साथ साथ कैसे अपने फैशन बिजनेस को सेटअप किया। सो वेलकम टू माय पॉडकास्ट मिसेस झा। Thank you so much for having me, Kiran. Thanks a ton. मिसेस झा, सबसे पहले तो मैं एक तो आपका इंटरेस्ट ना, आपकी फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब आई मस्ट से दैट फैशन डिजाइनिंग इज समथिंग दैट आई थिंक एवरीबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ दीज डेज, है ना, I सिंस agree. द सोशल मीडिया हैज स्टार्टेड। सो व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट? आपको कैसे इंटरेस्ट आया और आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे प्लीज कुछ बताइए। So I think it was a very gradual process for me as I was growing up. It was always there in me. Like I had the passion for clothes. I loved clothes. Even when my mom and dad would step out for the parties, I would love to design decide the color combinations for them and all. So it was there in me naturally. And as I grew up, so I made the final choice, and my parents were very, very supportive of whatever I did. So here I am. I think manifestations and destiny combined. Here I am a designer now. बिल्कुल। तो आपके लिए आपने शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी रही और शादी के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो शादी के बाद I think biggest challenge for each one of us, including you and maybe so many other Yes. ladies, is of course the nature of the job that our husbands have. So it's there, we have to go through a lot of postings and nayi jagah jao, you have to set up everything anew. So that I think is the biggest challenge. And that's about it. And the other challenges would include professional challenges, like dealing with the people who work for you. So you have to adopt a very middle path with them. So you cannot be too strict nor be too lenient. Their commitment levels are like absolutely different than what my commitment levels would be. If I have to give something to you tomorrow, I would totally want to stick to the deadline, but they would not. Hmm. So to encourage them to deliver things in time and everything is a challenge. Right. So yeah, these are the basic अच्छा, लेकिन challenges. आपने ये बिजनेस सेटअप कैसे किया? बिकॉज आप तो ट्रांसफरेबल जॉब में हो, आप अपनी वर्कशॉप कहीं मतलब किसी एक स्टेशन पे कर नहीं सकते। आपने कैसे स्टार्ट कैसे किया? So basically, when I started off, just graduated from college, I got into freelancing design with television channels in Bangalore and all. So we did a couple of shows, couple of events over there. Then when I got married, I came to Pune with my husband, and there we set up a boutique. It was again advised by my senior ladies only, who showed me the way, and they were like, "We must have a boutique inside," and they encouraged me to do that. So the boutique was running very well again. I got into exports even. I started exporting my designs Middle East to Dubai and even to Spain. And we were doing a lot of pageants and all over there. So everything was smooth. Then again, the transfer came, and family was always my first priority. It was always my priority to stay with my husband. And then I got pregnant with my first kid. So that's when I made the major decision, the major switch to go online. So since then, I have stuck to the online model. It suits me, and I'm a mother of two now, and I'm able to handle both of it together. That's a blessing. राइट। लेकिन आपका जो मतलब मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी दैट योर बिजनेस इज मेनली ऑन व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपका जो Correct. बिजनेस है। मुझे Correct. उसके बारे में कुछ जानना है कि आप मतलब वो सेटअप कैसे हुआ, कैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बने। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हिंदी में मुझे थोड़ा वो बता पाए तो। Sure. See, because मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो I already had a good clientele base, and my biggest accomplishment, I would say, Kiran, is that I've never lost on a client. So they've all basically stuck by me. So all these 13, 14 years, I had a good clientele base, and जब मैंने WhatsApp broadcast शुरू करा, it was basically with those clients.
that I हम्म। had. तो हाँ, तो वो क्लाइंट्स ही थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड धीरे धीरे अब ऐड होते जा रहे हैं, बाय द वर्ड ऑफ माउथ इट्स स्प्रेडिंग. राइट। सो काफी सारे हैं, एंड आई हैव गॉट 3 to 4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स. एंड जनरली अब हम क्या करते हैं कि जैसे वट एवर डिजाइन वी आर डेवलपिंग, जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम अपने वर्कशॉप पे, आई एम पुटिंग देम अप on the broadcast, and also the fabric options along with. So राइट। हाँ, तो वहां से लोग चूज करते हैं, एंड दे दे रिवर्ट टू अस दैट दिस इज व्हाट वी वांट. देन देयर आर सम इंडिविजुअल डिमांड्स एज वेल, हम्म। लाइक कि अगर आप हमारे ट्यूनिंग आउटफिट्स, फैमिली कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स राइट। और ओकेजन वेयर्स डिजाइन कर दें, या मैरिज वेयर्स कर दें, या बर्थडे वेयर्स कर दें, so then what we do is we take their orders, and then accordingly suited to their personality, I give them the options of the fabric राइट। and the designs, and then we go along together with राइट। the तो creations. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में जानना चाहूंगी। कहीं पे आपको मतलब कोई भी महिला जो ये फैशन का बिजनेस करना चाहे, मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जिसको पसंद है, या शी वांट्स टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, तो यू जस्ट अगर आपके कॉन्टेक्ट है तो आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं डेफिनेटली एंड देन यू बना सकते कैन। हैं. हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली बना सकते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप. एंड आप अपने सारे डिजाइन्स वगैरह जो भी वर्क है, यू कैन कीप अपलोडिंग ओवर देयर, एंड एज पर द ऑर्डर्स दैट यू गेट, आप बिल्कुल सेंड कर सकते हैं. शिपमेंट्स वाला वो वर्कआउट आपको करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि एक वर्कशॉप, एक परमानेंट लेबर फोर्स होना आपका बहुत जरूरी है टू कैरी आउट द ऑर्डर्स. तो यू हैव टू वर्क दैट आउट. अगर वो सॉर्टेड है, आपका हार्डवर्क, टैलेंट सब आपके साथ है, क्रिएटिविटी आपके साथ है, तो देयर इज माइल्स टू गो. बिल्कुल। अच्छा, ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा था। मान लीजिए जैसे किसी को फैशन पसंद है लेकिन उसको स्टिचिंग विचिंग नहीं आती है, तो इज इट इम्पोर्टेंट कि जो फैशन डिजाइनर उसको स्टिचिंग भी आए? So I would say it's important to a lot of extent, because क्या होता है when you have to get a difficult design done. Suppose it is regular, not everyday design की सूट कर रहे हैं, की ब्लाउज कर रहे हैं, which is a normal tailor's work. If you have to राइट। get some designer stuff done, so you should have the knowledge yourself to explain to your master G's and tailors and embroiderers the way you want it. So knowing stitching and pattern making is like an asset. When you have to explain your work, when you have to get your work done, तो वो एक asset हो जाता है आपके लिए कि आप अपने हिसाब से डिजाइन करा सकते हैं. It gives you that technical edge, I would say. So yeah, that is why it is pattern making and stitching, along with a lot of other subjects, is part of the curriculum. जो भी फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज हैं उसके पार्ट वो इसलिए हैं. तो राइट। यू बिल्कुल। मस्ट हैव नॉलेज. या राइट। सो योर ब्रांड नेम इज नमन, और आगे या आपके अगले 5 साल के आप कैसे देखती हैं फ्यूचर नमन का? बिकॉज अब मेरी जब आपसे बात हुई थी, यू वर सेइंग कि योर हैंड्स आर फुल ओनली विद या ब्रॉडकास्ट, दिस व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, एब्सोल्युटली, तो अभी आप सोशल एब्सोल्युटली. मीडिया पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हुए हो। सो नहीं. क्या प्लान्स है आपके? नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं टू एक्सपैंड मोर, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, एंड I know that is the next step, but I'm delaying it a little bit because मेरी छोटी वाली अभी बहुत ज्यादा छोटी है, तो I'm waiting for her to grow up a little. And when I have more time in my hand to give to my profession, then of course I want to expand more socially, maybe have my own online portal and get active Insta और FB पर, और इसको और expand करना है. तो that is next on the cards, but at the right time. राइट। सो डिड यू टेक अ ब्रेक कभी भी आपने? क्योंकि मैंने आपसे जब बात की तो आप बता रहे थे दैट यू वर कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग और अनदर, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने कैसे अपनी वर्कशॉप कैसे सेटअप की? मुझे, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। तो वर्कशॉप मेरी ऐसे हुई सेटअप जब माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, एंड उसके बाद ही पिक्ड अप अ जॉब इन लुधियाना. सो आई वेंट टू लुधियाना, एंड ओवर देयर आई हैड ऑलरेडी ऑर्डर्स टू फुलफिल. सो आई लुक्ड फॉर द राइट टेलर्स एंड मास्टर चीफ. मैंने उन लोगों को ढूंढा और मैं अपना काम कराने लग गई, पर्सनल भी कराने लग गई एंड ऑर्डर्स का भी कराने लग गई. तो जब हमारा वहाँ पे बढ़ता गया सब कुछ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट have a permanent setup here only.
सो मैंने फिर वहीं पे सेटअप अपना करा, वर्कशॉप वगैरह सब कुछ, वहाँ के क्लाइंट्स भी थे, मेरे अपने क्लाइंट्स भी थे, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑफ. सो वैसे हमने वर्कशॉप पूरा वहाँ पे सेटल किया. मेरे फैब्रिक वेंडर्स से लेके द एम्ब्रॉयडरर्स एंड द टेलर्स एंड माई मास्टर जी, everybody, they're all there and we connect daily on WhatsApp. मतलब रोज मैं उन लोगों को वीडियो कॉल करके क्वालिटी चेक एंड all those other things, जो shipments जानी है, कैसे क्या होना है. So I manage all that through video calls now. राइट, सो ये जो फ्रीडम है वो आपको, क्योंकि आपका सेटअप ऑलरेडी लुधियाना में एंड यू डू इट Yes, ऑनलाइन, I do आप it all. फोन के थ्रू और कहीं पे भी आप पोस्टिंग हो तो आपका वो आई थिंक उसमें आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको फ्रीडम मिल एक जगह जाती स्टक है. होने की जरूरत नहीं है हाँ, ना. मेरे को अपने टाइम की फ्रीडम है. मेरे को एक जगह स्टकअप होने की जरूरत नहीं. लाइक आई कैन मूव along with my husband on his postings, and I want to be that one person who's always available for the family, physically, emotionally, anyhow. So yeah, so this gives me that kind of freedom. राइट, सो व्हाट केप्ट यू गोइंग. What kept me going? I would say foremost it has to be my passion for clothes and my passion for my work. So I love creating new designs and new things and new clothes for people. So that is my biggest passion. Then, of course, my family members have been very, very encouraging. So they've always kept me very driven towards what I'm doing. And especially my husband, like he too has like a 5 year, 10 year, 15 year plan for my work sorted. While I'm a very in the moment sort of a person, he's the one who plans ahead and keeps me motivated all the time. So I have to give the credit to my family members and of course my clients, like who are very appreciative of the work and who are happy with me, and they keep texting me and keep sending me the images of the creations and all. The wo sub is the biggest motivating factor to keep me बिल्कुल, going. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा, with the rising of the social media, trends are rapidly changing and पता ही नहीं चलता. Then how do you forecast trends? So forecasting trends, yeah, it's a bit of a study that you have to do. So as a designer, I think my biggest giveaway is the kind of fabrics that I see in the market. So it changes every 3 to 4 months. It completely changes. तो आपको पता लग जाता है कि these are the fabrics which are in. The colors part of it is predicted by the Pantone Color Institutes and the institutes likewise, who sort it out ki what's the in season for the color. Then you watch the runway shows and you watch the celebs, what they are wearing, the newspapers, the magazines, everything is like they kind of tell you what the current trend is. And then you work on it with your own imagination and creativity. So that's how I do it as a designer. और आई थिंक फॉर एवरीबडी एल्स इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अभी यही ट्रेंड है तो यही करना है हमें. There are things which you don't like, which you think they are not suited to your personality, so dump those. Adopt the ones which you think suit and which you want to. And if you see, the current trends are always inspired by the past trends, Right. like It's revamped like in a a new way maybe. time circle, whatever Yeah, goes and then it again comes back. comes back maybe in a slightly revamped Yes. manner. So that's what it is. At the end of the day, I think your personal style should be true to your individuality, to your personality. Absolutely true. Actually, you had two beautiful daughters also. Uh, how they inspire your work? So yeah, my work is for them. I get totally inspired by them. In fact, I started twinning when twinning was not a term at all. So Right. back in 2014, when I was blessed with my elder daughter, so when I had fabrics, I was getting things designed for myself. I would say, why not for my daughter also? Let's wear the same things. It'll be fun. So that's how I started. It wasn't common at all back then, like the way it is now. So in fact, that I told you, the twinning term was not even there. So we would wear the like dresses and all. And I think 2, 3 years later, I saw it becoming like a big time Trend. fad.
सो बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद फिर देन द सेकंड वन केम एंड आई वाज इक्वली थ्रिल्ड, मी एंड माय हस्बैंड, एंड वी वर लाइक वाओ, वी हैव अनदर डॉटर, सो टाइम टू डिजाइन मोर, एंड अब ट्विनिंग के अब हमारी ट्रिपलिंग होती है. सो नाउ द एडेड प्रेशर इज ऑन माय हस्बैंड्स शोल्डर्स. नाउ ही हैज टू मैच अप विद द colors we are wearing, or we have some family coordinated outfits. In fact, people around us, if the three of us are not dressed like alike, they get a tad bit disappointed. आज एक Hmm. जैसा क्यों नहीं है? Bilkul. So, Because I've yeah, seen your so videos and photos na, you all have worn same clothes. It was looking so beautiful. And I think yeah, आपकी photos देख के भी आधे से ज्यादा orders तो आपको twinning वाले और ये क्योंकि because ट्विनिंग, हाँ, customized हो जाते हैं काफी ना. आते हैं. हाँ, मुझे कोऑर्डिनेटेड ऑर्डर्स बहुत आते हैं. सो या, Right. so that's the in thing these days. Right. Actually, you run an NGO also named Sukun. Tell Yeah. us something about the Foundation. So Sukun happened like way back 4 years back, when it was a time when migratory workers were, walking bare feet without any foot. You would remember the way it was all over Yes. the news. And also my heart really went out to them. And I was like, we can definitely make some difference from our end. So I had very encouraging seniors who kind of, motivated me and supported me in the way. So we collected a lot of stuff to give out to the migratory laborers who were working in. And then it continued. So, I mean, then I never stepped back. So it was such a good thing. It was such a good feeling to give back to the society in some way. Right. So Sukun, the name was given by my father. So I adopted the name and I've got it registered now last year. And we hold a lot of donation drives, be it clothes, be it medicines, be it Hmm. stationery. We are affiliated with some educational institutions as well. So yeah, it's all about giving. It's all about spreading smiles, and that's what Sukun is all about. Such a noble deed and you're doing fantastic job there. अच्छा एक क्वेश्चन की यू आर एन आर्मी डॉटर ऑल्सो और वाइफ भी कैसा कितना डिफरेंस है एक आर्मी की बेटी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी एंड देन आर्मी ऑफिसर की वाइफ क्या अच्छा है आर्मी का ऐसा कैसा लगता मुझे तो बहुत डिफरेंस लगता है, लाइक एज अ डॉटर बिल्कुल ही अलग था. लाइक you see everything from a different है angle altogether, and yeah, so uh, it was very carefree back then. As a daughter, it is like ठीक है, मम्मा पापा हैं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. We only had the perks part of it, मतलब जो enjoy करना है हमें और जो वो सारी चीजें करनी है वही था as a daughter. So, and it was always a very big privilege to be an army officer's daughter. Of course, that was. And as an army wife, again, I'm a very proud army wife as well. But yes, along with being a wife, you have to shoulder a lot other राइट responsibilities that come along with it. ट्रू So yeah, the two are quite different. But ये है कि being from the same background, I don't see a lot of difference in the way the life is going. राइट सो यू ऑलवेज न्यू कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में ना बिकॉज यू हैव लिव्ड थ्रू I- इट बिकॉज सो I've मेनी lived through it. लेडीज आई इंटरव्यूड हाँ, मोस्ट ऑफ देम से कि हमें पता ही नहीं था कि शादी के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा बिकॉज सच ट्रांसफरेबल जॉब तो आप अपने करियर के लिए yeah, तो टाइम दे ही नहीं पाते बिल्कुल. हो नहीं, I knew what I'm signing up for. I knew that. Being from the same background, I knew what I'm signing up for. So yeah, it was natural. It राइट was a सो conscious decision. या so what message would you like to give to ladies जो आपका ये podcast देख रहे हैं and who are into fashion and they want to pursue it as a career also Oh, I would say that please go all out with your talent, with your creativity, because I think जो biggest asset हमारे पास होती है वो है हमारा खुद का talent और खुद की creativity. So if you have that, then please go ahead, and of course अगर इसको थोड़ा और channelize करके करना है, then you must enroll in for the fashion designing programs. right So yeah, so that ways you can decide आपको कौन से फील्ड में जाना है, आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, मर्चेंडाइजिंग में जाना है, रिटेलिंग में जाना है. So right that gives you a proper knowledge
of where you want to be. So I would say sky is the limit. Even sky may not be the limit. Rise and shine. बिल्कुल. So thank you so much, Mrs. Jha, for talking to us. It was wonderful having you on the podcast, and wish you loads of Thank success you. for your brand. And I wish कि आने वाले 3-4 सालों में हम हर जगह नमन को देखें, and हम आपकी पूरी आपका लेबल एक अलग बन जाए और हम उससे ऑर्डर करें. Thank you so much. Thank you so much, Kiran. Thank you for having me here, and all the best to you Thank with you. the kind of task that you have undertaken. All the very best to you as well. Thank you Thank so you for much, and having me. good evening, Mrs. Jha. Good Bye-bye. evening. Thank you.